Hello everyone. Already we have started our second chapter, 5-year planning in India. Whatever topics I have taught you, having any doubt in that till now, then you can ask. So today we have to start types of economy, capitalist economy onwards. Okay. So you all are having any confusion, or we can continue to the next topic. We can proceed, beta. Okay, beta. So now today we are starting economy, capitalist economy. What is capitalist economy? You all are knowing. That day also I have discussed with you. Capitalist economy means the economy where private investors are investing money and their main motive is to earn profit. So that economy is called as capitalist economy. Or we can say it is a market economy, or we can say it is a free economy where no interference of the government is there. Their demand and supply plays a main role. According to the demand, producers are supplying goods. So that economy where no interference of the government is there, and where two main rules which are running that economy, that is due to demand and supply, and prices are fixed according to demand and supply only. No individual is getting any special role here. Due to that, this economy is called free economy. Free economy means all are free. Whatever they want to sell, they can sell. Whatever they want to produce, they can produce. Government is not making any rules and regulations. But here, they are producing, they are selling the goods to earn high profit. So that type of economy where main motive is to earn high profit, that economy is called as capitalist economy. Clear this, beta? What is capitalist economy? Okay. So the topic what I taught, it is understood or not? Nothing. So once again I am repeating, listen it carefully. Today we are starting a new topic, that is capitalist economy. Capitalist economy is also called as market economy, or it is called as free economy. Why we are calling it as a free economy? Because here no interference of government is there. Government is not making any rules and regulations in this economy. Here private investors are there. They are making their own rules and regulations, and according to their rules and regulations, they are running their business. They are making only those goods whose demand is high. And when demand is high, so they are making that goods at high prices so that they can earn their high profit. Because capitalist economy is run by private investors, and private investors' main motive is to earn high profit. So in short, we can say it is an economy where no interference of the government is there. Demand and supply plays a major role in this type of economy. Policies are made by the private sectors, and here private sectors only run their business, and their motive is to earn high profit. It is also called it is also called free economy. Now topic is clear? Clear or not? Okay. So now next is features of capitalist economy. Features means what are the characteristic of this type of economy. So whatever things we have learned, that only features we are going to write. So first feature they have made, there is a private ownership. Private ownership means private investors are running their own business. They are producing goods according to the requirement by the consumers. Second feature, means of production. Whatever goods they are producing, their main motive is to earn high profit. Their main motive is to appoint laborers at very cheap rate, so that when their expenditures are less,
so they can earn high profit. Then third characteristic, they are selling producing goods to sale and to sale in Indian market, even in international market at high profit. Fourth, whatever goods they are distributing, whatever goods they are giving to the sellers, purchasers, so they are seeing first their purchasing power, how much they are ready to pay. According to that only they are fixing the price and they are selling the goods. Then next, their government is not maintaining any rules and regulations for the production, but rest all government is making rule. But for uh, production of goods, they are not making any rules and regulations. So clear the features. Now, merit of this type of economy. Merit of this type of economy is here main motive is to self-interest. Producer is working for their own motive. So when producer is working for their own motive, for their self-interest, and their motive is to earn high profit, and when all producers profit is increasing, so ultimately the national income of our country will be increasing and GDP will also increase. So merit of this type of economy is first point self interest, second point high profit, third point national income increases, fourth point due to that economic growth is there for the country. Clear all the merits. You can write text even if you are not able to speak up. Okay. Then demerits. Demerits of this type of economy is that here they are ignoring collective interest. Collective interest means common interest के बारे में इन लोग सोचते ही नहीं है, सोशल वेलफेयर के बारे में सोचते ही नहीं है. ये जो काम करते हैं बस अपने पर्सनल फायदे के लिए करते हैं और उनका पर्सनल फायदा होता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना. इसीलिए सबसे पहला डीमेरिट है सोशल वेलफेयर, यहाँ से इग्नोर हो जाता है. ये जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं हाई प्राइजेस वाले, तो व्हेन दे आर प्रोड्यूसिंग गुड्स एट हाई रेट so that they can earn high profit, due to that only rich person can purchase that goods, poor person and middle class person are not able to purchase that goods. So due to that this economy there will be inequality increases in our economy. Social justice is not there in this type of economy. Then next, planners felt that adopting a market economy model of growth would mean the majority of people of the country would be left behind. अगर हमारे इकोनॉमिस्ट सोचेंगे कि हम मार्केट इकोनॉमी को ही फॉलो करें अपनी कंट्री की ग्रोथ के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी कंट्री में पीछे ही रह जाएंगे. जैसे अभी करंट पोजीशन देखा जाए तो अंबानी, अडानी, इन लोग और रिच होते जा रहे हैं क्योंकि इन लोग ने गवर्नमेंट सेक्टर्स भी खरीद लिए हैं. तो ये प्राइवेट पर्सन है, प्राइवेट सेक्टर वाले हैं, तो ये बस अपने मोटिव के लिए काम कर रहे हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रहे हैं. और जो पुअर पर्सन है वो और पुअर होते जा रहे हैं. तो ये हमारी कंट्री में क्या हो रहा है, इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है. अभी तक हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी थी, अब धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर्स इंक्रीज होता जा रहा है. तो एक टाइम आएगा कि जब हमारी इकोनॉमी टोटली क्या बन जाएगी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी हो सकती है. बट अभी तो सिचुएशन मिक्स्ड है क्योंकि गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है. बट गवर्नमेंट अपनी कंट्रोलिंग पावर कम करती जा रही है. दैट मीन्स इंक्रीमेंट ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज इंक्रीजिंग इन आवर इकोनॉमी. Due to that, social welfare is decreasing from our economy. So this topic concept is clear to everyone properly. Okay. So now we are starting next topic, that is socialist economy. What do you mean by socialist economy? Anyone can tell me? From the name only it is clear. If we are dividing the name, socialist economy means social economy. Economy whose main motive is to provide social welfare to the country. And social welfare to the country is provided by the government only.
So the economy where whole control, whole policies, whole decisions are made by the government, that economy is called as socialist economy. In this type of economy, their main motive is to produce goods for the poor person or for the middle class people so that their demand will be fulfilled, and when their demand is fulfilled they are able to earn profit. So ultimately the richer section will be reduced and poor section will be increased, so inequality will be decreased from our economy. So such an economy where main motive is to provide employment opportunities to all the poor person, to all the middle class person. So when the percentage of earning ratio by the citizens of the country will be increases, so per capita will be increases and national income will also be increased. So such type of economy where whole rules and regulations are made by the government for the social welfare of the country, and social welfare is to provide employment opportunities to so that the poverty can be reduced from our economy. So such economy is called as socialist economy. Okay, meaning is clear. So so now the features of this type of economy. So features, whatever meaning we are writing, that only the features we can make a point. So first feature, according to book, it is mentioned that here goods are produced collectively by the society. Means labors are there more. They are not using more machines. They are using more labors. And when more labors are there, that means poverty will going to reduce. So here productions can be done collectively owned. Means collectively owned means major लोगों की डिमांड देखी जाती है, मिडिल क्लास और पुअर क्लास की डिमांड देखी जाती है. अकॉर्डिंग टू दैट दे आर प्रोड्यूसिंग द गुड्स, सो दैट यहाँ पे कोई प्राइवेट पर्सन रिचर पर्सन की डिमांड नहीं देखी जाती है. एवरी पर्सन दे आर सीइंग एंड अकॉर्डिंग टू दैट दे आर प्रोड्यूसिंग द गुड्स. Second, main motive is to social welfare. Third, here direct participation of the government is there because government is controlling this economy. So whatever industries run by the government, their rules and regulations are made by the government only. So such law, orders, defense वो तो बना ही रही है कॉमनली, बट जो इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट की चल रही है उन इंडस्ट्रीज में सोशल वेलफेयर का काम होता है. So such economy, such industries were called as socialist economy. नाउ मेरिट, फर्स्ट मेरिट ऑफ दिस इकोनॉमी, जब ये इकोनॉमी पुअर पर्सन्स के लिए काम करेगी, जब ये इकोनॉमी मिडिल पर्सन्स के लिए काम करेगी, रिचर को भी वो साइड में रखेगी, मगर मेनली उसका जो चांस होता है पुअर और मिडिल के लिए, तो हमारी कंट्री से इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी और हमारी कंट्री में इक्वालिटी बढ़ जाएगी. तो जब हमारी कंट्री में इक्वालिटी बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि हर पर्सन की इनकम बढ़ गई है. So due to this economy, inequality will be reduced, equality will be increased. Per capita will be increased, unemployment problem will be reduced, and the growth of the economy will take in place. Then demerits. First demerit is that यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव मेन नहीं है, सोशल वेलफेयर है. तो प्रॉफिट मोटिव जहाँ मेन मोटिव होता है तो वो बहुत महंगी महंगी हाई रेट में गुड्स बेचते हैं, बट यहाँ सोशल वेलफेयर है तो इनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है. जैसे गुड्स प्रोड्यूस हुए 10 रुपए में तो ये 11 रुपए में बेच देंगे, बट जहाँ मेन मोटिव ज्यादा है तो वो 10 वाली चीज 15 में बेचेंगे, 20 में बेचेंगे ताकि हम प्रॉफिट ज्यादा कमा सके. बट यहाँ पे जब वो कम रेट्स में गुड्स बेच देते हैं तो उनकी इनकम तो कम ही हुई. इनकम कम हो रही है तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? जीडीपी हमारी कम होगी. तो यहाँ पे डीमेरिट हमारा मेन है. प्रॉफिट इज नॉट द मेन मोटिव, ड्यू टू दैट prices are less, and when prices are less then profit will be less. So when profit we are gaining less, then the GDP national income will be less, and national income कम रहेगी, then हमारी जीडीपी भी कम रहेगी. सो ये हमारी एक डीमेरिट बन जाती है सोशलिस्ट इकोनॉमी की. सो टेल मी, हैविंग एनी कंफ्यूजन नाउ इन सोशलिस्ट इकोनॉमी, देन यू कैन आस्क बेटा.
Having any doubt? Okay, beta. Now, mixed economy. Mixed economy is the mixture of socialist and capitalist economy. So, where private sector is also running and government sector is also running. Both are running. Both are making their rules and regulations for their own department. But for the commonly defense and law and order that is made by the government. But for the production rules and regulations, private sector will make their own and government sector will make their own. So where both the economics are running together. Private sector is working for their profit motive, government sector is working for the social welfare. So both are working, then problems of arises under capitalist and socialist economy will be solved together. So that economy is called as mixed economy. Clear this also? Features of mixed economy. Features of mixed economy. First feature, means of production are owned by private entrepreneur as well as government. Means production private sector भी करता है और गवर्नमेंट सेक्टर भी करता है क्योंकि दोनों की इंडस्ट्रीज दोनों की फैक्ट्रीज यहाँ पे रन आउट हो रही है. फिर प्राइवेट सेक्टर के डिसीजन जो है वो अपने हिसाब से लेते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के डिसीजन वो अपने आप से लेते हैं. So that only I had explained just now. And both private and public sector were playing their main role because they both are making different type of products. So here both are working for their main role for their own benefits. Clear now? Merits. Anyone without reading can tell me the merit of this method. Mixed economy में क्या क्या merits आएंगे? हम्म. और सोशल वेलफेयर होगा. ओके. और equality should be there. Okay. और economic level will also increase. Okay. और बेटा? Yes, good. Yes. तो अब हम लिख सकते हैं that means all the points you have covered up. So any explanation you require now for the merits? Okay. So where mixed economy is there, that means capitalist and socialist both are working together. Capitalist is working for GDP growth, that means growth will be increasing. And socialist is increasing the equality, that means differentiation between the rich and poor will also be solved. So both the problems are solved, that is the merit of mixed economy. Now demerit, say one point by their own. What are the demerits of this economy? इधर क्या demerit बन जाएगी बेटा? Okay, some industries were earning less profit, some are learning high profit. और आपको यहाँ इंडस्ट्री का नाम लेकर क्लैरिफाई करना पड़ेगा, जैसे बुक में बताया है. अगर गवर्नमेंट सेक्टर की इकोनॉमी है तो गवर्नमेंट सेक्टर में करप्शन ज्यादा हो जाता है, तो करप्शन तो हर जगह ही ज्यादा है, तो एक डीमेरिट बन जाएगी मिक्स्ड इकोनॉमी में. करप्शन इंक्रीज हो जाता है. एंड व्हेन करप्शन इंक्रीजेस दैट मींस एफिशिएंसी ऑफ द लेबर डिक्रीजेस. करप्शन का मतलब क्या होता है? लोग काम नहीं करते, बैठे रहते हैं. जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है? They know that they will get money, they will get monthly salary, whether they are working, whether they are not working. So वो काम करे या ना करें, उनको पैसे तो मिलने ही मिलने हैं, तो वो बैठेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, काम नहीं करेंगे. तो ये क्या है? करप्शन है. विदाउट वर्किंग दे आर गेटिंग सैलरी.
So first demerit, corruption increases, and due to corruption, efficiency of production, efficiency of labor decreases. Clear? So in our country, India, mainly problem is this only. Then आपका second problem है, yes, growth rate will be slow and lack of efficiency. Good. Then any other point, beta? Yes, good. Delay in economic decisions. Delay in economic decision means corruption जहाँ पे भी होगा तो decision लेने में slow down हो जाती है. तो डिसीजन डिले होते जाएंगे तो कई इंपॉर्टेंट मैटर्स हमारे ऐसे ही छूट जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं. तो ड्यू टू दैट हमारे कई रूल्स, एक कई ऑर्डर्स वगैरह, टेंडर्स वगैरह भी प्रॉफिट जहाँ हो रहा होता है वो भी कैंसिल हो जाता है. तो ये चीज हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, जिसके कारण इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1948 and the directive principles of Indian Constitution reflected the outlook of the planner that India would adopt a economic order where there was a strong public sector but with full respect to a private property. तो इन्हीं प्रॉब्लम से बचने के लिए 1948 में IPR और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने रूल्स बनाए थे कि हमारी कंट्री में पब्लिक सेक्टर भी चलेगा, प्राइवेट सेक्टर भी चलेगा, मतलब गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज भी चलेंगी और प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी चलेंगी. गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज में तो पूरे रूल्स रेगुलेशंस गवर्नमेंट के चलेंगे, मगर प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट ही बना कर देंगी. तो जब गवर्नमेंट ही बना कर देंगी तो जिसके कारण हमारी कंट्री में क्या होने लगा था, प्राइवेट सेक्टर्स भी अपना फायदा नहीं देख पा रहे थे, प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे थे. इसलिए 1991 में हम लोग टोटली इंसॉल्वेंट हो गए थे, इकोनॉमिक डेप्ट में आ गए थे, जो अभी आपका आगे चैप्टर आएगा उसमें मैं पूरा डीप में पढ़ाऊंगी. एलपीजी पॉलिसीज चालू करी गई थी. तो 1948 के प्रिंसिपल ने हमारे लिए गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों के लिए रूल्स रेगुलेशंस गवर्नमेंट के द्वारा बनाया था, तो ये भी एक डीमेरिट बन जाती है. आ गया? ये सारी चीजें समझ में आ गई बेटा? So all these so all these concepts are clear to everyone. So now we can start a new topic, goal of planning in India. Goal of planning in India by the topic we are understanding. First you tell me, what do you mean by planning? Planning का मतलब क्या होता है? Hmm. Okay. और बताओ बेटा. Okay. तो चलो हम बताएं अब आप लोगों को. प्लानिंग का मतलब क्या होता है? यू ऑल आर नोइंग वेरी बेटर. इन योर लाइफ every moment you are doing the planning. Yes or no? Yes na? So every matter, every moment, every decision what you are going to take, every place you are doing the planning. So what is planning? You are knowing. What do you mean by goal? Goal का मतलब क्या होता है? Task, aim, जो हम चाहते हैं. Yes, what you want to achieve, that is called goal. The goal of planning in India मीन्स हमारी इंडिया ने अपनी प्लानिंग का मेन क्या गोल फिक्स करा है, क्या गोल बनाया है, मीन्स हमारी कंट्री क्या चाहती है अपनी कंट्री से. वो अपनी कंट्री की डेवलपमेंट चाहती है, जैसे कि वो अपनी कंट्री की ग्रोथ चाहती है, वो अपनी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम खत्म करना चाहती है, वो अपनी कंट्री से पोवर्टी की प्रॉब्लम खत्म करना चाहती है, वो अपनी कंट्री में मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजीज लाना चाहती है. तो जो भी वो चाहती है अपनी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए,
उसको क्या कहा जाता है? गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया. In short, meaning is clear. What do you mean by goals of planning in India? This topic may be called as objectives of planning in India. इसको और क्या कहा जा सकता है? Objectives of planning in, yes, in India. Yeah, common goals of 5-year plans were also called out. इसको और क्या कहा जाएगा? Common goal of 5-year plan. So by any of the name in exam question is coming, so you have to remember that you have to give this topic answer. So first main objective of planning is for the growth of our economy, which is called as GDP growth. तो जीडीपी ग्रोथ का मतलब क्या होता है? जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स दे वांट टू इंक्रीज देयर इनकम, दे वांट टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन. जब वो कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली इनकम इंक्रीज होगी, क्योंकि गुड्स को सोल्ड करके पैसे आते हैं. सो वेयर दे आर, they want to increase their production of the country, and when the output of our economy will be increasing, flow of goods and services will be increasing in our economy, automatically our economic growth will be there, which is called GDP of our country will be going to increase. So increase in GDP are depend on two factors. First factor, increase in resource base of the country. Resource base of country means whatever things the country is having, we have to use that resources in a better manner. Second, increase in production through innovative technology. So if we want to increase our production, so we have to use modern technologies. When we are using modern machines, so automatically the production of our goods are increasing. So due to these two factors, production will be increasing, and when production is increasing, GDP will increase. Clear this objective to everyone? Second main objective of our planning is modernization. What do you mean by modernization? We all are adopting new things. As I'm saying, as your nani nana or your mummy papa is living, same way you are living, or your way of style living is changed, standard of living is changed. It is changed. Why it is changed? Due to modernization adopted. हम किस चीज की ओर शिफ्ट होते जा रहे हैं? वी आर शिफ्टिंग टू वेस्टर्न कल्चर. वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रहे हैं. एक सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ. यू आर नाउ इन 12th क्लास. नाउ आफ्टर 12th you are moving to different places for the further study. So when you are leaving your place, you are going to other places, other cities, big cities and town. So same way as you are living here, same way you are going to live there, or your style will be totally changed according to that. You will change. If you are not changing, then that area persons were saying that you are backward, and you are adopting that modern technologies, that modern style, then you are coming under the counting of modern person. And when you are coming back to your city or town, then your parents, your relatives, your friends will be asking you, yes, you are totally changed now. पता लग रहा है कि तुम big city से आए हो. So your standard of living is changed because you have adopt modern technology. So modernization is changing our lifestyle, and when we are changing our lifestyle, when we are changing, अभी हम आपकी lifestyle के बारे में बोल रहे हैं. ऐसे ही अगर हमारी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी हर चीज में मॉडर्नाइजेशन लेकर आए, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में वो ग्रीन रिवॉल्यूशन लेकर आए, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करना चालू करा जिससे प्रोडक्शन बढ़ गई. इंडस्ट्रीज में मॉडर्न मशीन्स लेकर आए जिससे प्रोडक्शन बढ़ गई. अब ट्रेन जो अभी हमारी चल रही थी, ट्रेन सब चेंज होकर लोकल ट्रेन से मेट्रो ट्रेन से बुलेट ट्रेन पे शिफ्ट हो रहे हैं. तो ये क्या हो रहा है? मॉडर्नाइजेशन बढ़ती जा रही है. एंड व्हेन मॉडर्नाइजेशन इज इंक्रीजिंग, तो उससे क्या हो रहा है? हमारी कंट्री जो पहले कम लेवल में थी,
बहुत ही कम लेवल में थी। आज हमारी कंट्री 10th 9th 8th पोजीशन में अपवर्ड होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि मॉडर्न थिंग्स वी आर अडॉप्टिंग। सो विच एवर कंट्री इज यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इवन दे आर एबल टू मेक मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तो वहाँ की ग्रोथ अल्टीमेटली होती है। इसलिए सेकेंड मेन मोटिव ऑफ आवर गवर्नमेंट is to bring modernization or to adopt modernization by all the sectors, by all the citizens of our country. Clear? This objective is also clear. Clear है ना बेटा ये point भी? Okay. Then next point, reading is necessary or this way only it is clear? See, they have given agriculture sector में green revolution increase हुआ है, modern technology. आउटपुट सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम लोग ने मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज करी हैं। सर्विस सेक्टर में आईटी लेवल पे पहुंच गए हैं। बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग पे पहुंच गए हैं, जिसमें कॉल सेंटर्स वगैरह खुल गए हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग ने मॉडर्न सेक्टर्स अपने सोशल आउटलुक में अडॉप्ट किया है, जिससे हमारी स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो। वुमेन्स को पार्टिसिपेट करने का पावर मिल गया है, वुमेन पावर एम्पावरमेंट इंक्रीज हो गई है। पहले नहीं तो हमारी कंट्री में दादा दादी के टाइम पे, मम्मी पापा के टाइम पे क्या इतनी वुमेन्स वर्कआउट करते थे, सर्विस सेक्टर में जाते थे, घर से बाहर निकलती थी नहीं। Now they will also get an empowerment that they can move out from the home, and even they can start their own business. They can do the job under the companies, under the IT sectors, under any of the employer. So these all things mentality change. So when the mentality of the persons change, that means the economic growth is there, that means modernization is there. Clear this now? Then the next point is self-reliance and self-sufficiency. Anyone, please tell me the meaning of these two words. What do you mean by self-reliance? Reliance का मतलब क्या होता है बेटा? Yes, self-reliance means self-independent. रिलायंस मतलब डिपेंडेंसी, मगर सेल्फ रिलायंस मीन्स सेल्फ डिपेंडेंसी। मीन्स हमें अपने ऊपर डिपेंड रहना है, दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होना। तो आज से आप लोग भी यही डिसाइड कर लो, कॉपी कंप्लीट करने के लिए हमें अपने फ्रेंड्स के ऊपर डिपेंड नहीं होना, खुद कॉपी कंप्लीट करनी है। सेल्फ इंडिपेंडेंट जिस दिन बन जाओगे, उस दिन से आपकी डेवलपमेंट होना चालू हो जाएगी। So instead of doing cheating, you should be that I will do my work by my own. And when this thing will be coming in your mind, that means your development will be there. होगा development उस दिन से कि नहीं होगा आपका development? So I know how many were completing the copies. They are taking the copies of the students who have completed and copying and sending me. But उससे क्या आपको कोई फायदा हो रहा है? आप कुछ सीख रहे हो? Copy कर लिखना is not matter. Main motive is to use your brain, do it by your way. Third point, continuing our topic only now. So self-reliance or self-sufficiency means we should be not be dependent on others. We should be independent on ourselves. So जब हमारी कंट्री खुद डिपेंड होगी, जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था, ब्रिटिशर्स ने हमें टोटली क्या बना दिया था? डिपेंडेंट बना दिया था अपने ऊपर, कि हम बस रॉ मटेरियल सप्लाई कर सकते हैं और वो हमें फिनिश गुड्स सप्लाई करके देंगे। अगर वो हमें फिनिश गुड्स नहीं देते, तो हमारी कोई भी नीड्स फुलफिल ही नहीं होती, हमारा और डेवलपमेंट नहीं होता। तो अब हमारा जब इंडिपेंडेंस हो गई, तो हमारी कंट्री ने मेन प्लानिंग करी कि हमें क्या करना है, डिपेंडेंसी खत्म करके इंडिपेंडेंसी चालू करनी है, जिसको कहा जाता है सेल्फ रिलायंस। आ गई पॉइंट समझ में? Keep studying.